Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Plant Ecology and Phytogeography. This is your lecture number 3, and in this lecture we are going to discuss the environmental factors, or we may say that these are the ecological factors. Okay, so let's discuss about the several types of ecological factor, and आजर class रे basically हमें light as the ecological factor detail study करना. Okay, so that देखो एनवायरमेंटल फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर कहा के कहूँ. ओके, तो देखो एनवायरमेंटल फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एनी फैक्टर और एनी एनवायरमेंटल कंडीशन जे कि हमर लिविंग ऑर्गेनिज्म रो डेवलपमेंट के हला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रो तर लाइफ के इन्फ्लुएंस करूचे पॉजिटिवली और नेगेटिवली ताके कहू जो मैं काम बोली करी एनवायरमेंटल फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर्स बोली करी कहू. Okay, and these factor influence and determine हमर ये जे environmental factor अच्छे ये माने काना के influence करबे काना determine करबे. They will determine presence or absence of the plants. Okay, हमें जेहेतु basically plant ecology पढ़ो so that most of the example हमें plant नेगरी जिमा. So our environmental factor will decide the presence or absence of the plant in a particular area. गोटे particular area रे plant present रहबा कि absent रहबा, गोटे plant grow करबा कि नहीं grow करे, that depend upon the environmental factor, and it also determine the vigor or weakness of the plant. Vigor माने strength and weakness. Plant strong हवा कि plant weak हवा, that is also depending upon its environmental factor or ecological factor. Okay, as well as it also determine the successfulness as well as failure of the plants to grow in a particular habitat. But a particular habitat रे plant successfully establish होई परबा कि failure होई जिबा तार growth टा, that is also depending upon the what, that is your ecological factor. Okay, so ecological factor these are also called as abiotic factor. इधे के other हमें काना कहि परमा abiotic factor because they are not having the life, so that abiotic factor बोली करी कहि परमा. And one of the biologists, that is A.S. Bhogi, in 1971 he gave the environmental ecology concept. Environmental ecology कहा कि कहू जो study of the abiotic factor, that is known as your environmental ecology, जेंडा कि A.S. Bhogi 1971 रे introduce कले. Then environmental factors are grouped into different category. One of the category जेंडा कि कहू climatic factor. Climatic factor काना हमर पानीपाग ऊपर जेनटा डिपेंड करूचे और हमर क्लाइमेट ऊपर जेन फैक्टर टा डिपेंड करूचे. ओके, एंड दिस क्लाइमेटिक फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू द एरियल एनवायरनमेंट और द एटमॉस्फेयर. हमर एयर अछि और हमर एयर जेन एनवायरनमेंट अछि और हमर एटमॉस्फेयर जेन अछि डिफरेंट फैक्टर ताके हमें पढ़मा कहर अंडर रे क्लाइमेटिक फैक्टर अंडर रे पढ़मा. जेने के लाइट पढ़मा, टेम्परेचर पढ़मा, प्रेसिपिटेशन माने रेन वाटर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बाबद रे पढ़मा, एयर बाबद रे पढ़मा, एटमॉस्फेयर बाबद रे पढ़मा, that is come under the climatic factor. Then also another factor, that is your edaphic factor. Okay, edaphic factor kana that is related to the soil condition. Edaphic word जेन जगह अछि that is related to the soil. Okay, soil बाबद रे discussion करमा हमें किन factor under रे, that is under the edaphic factor. Then असला physiographic factor और ताके कहमा topographic factor और physical factor of the land. Land जेते देखुचू land टा different area रे convert जेतिसे और different structure रे convert जेतिसे. Topographic माने कण structural. Okay, तमर land जे देखमा different structure रे changes हेतिसी, जेन देखि mountains हला, flat land हला, valley हला, latitude हला, altitude हला, they come under the physiographic factor. इटा जेन different factors कथा कहूचू climatic factor रे पहला हम आज डिस्कशन करमा light as the ecological factor. तापर टेम्परेचर बाबद रे डिस्कशन करमा, precipitation, एयर, एटमॉस्फेयर समस्तंगर बाबद रे वन बाय वन डिस्कशन करते जिमा. ओके, तो फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर जेंटे कि हम आजिर क्लास रे डिस्कशन करबार के जाउछन, दैट इज द लाइट एज द क्लाइमेटिक फैक्टर और लाइट एज द इकोलॉजिकल फैक्टर. लॉन्ग क्वेश्चन रहसी बहुत डिटेल जिमा हमें लाइट बाबद रे. ओके, so let's start this light as the climatic factor. Light, that is the most essential abiotic factor, and without light life cannot exist.
बिना लाइट रे लाइफ रो एग्जिस्टेंस ही ना न गुटे जिनिस में कहि देमी जदी लाइट आसुचे तो प्लांट्स ऊपर पडुचे प्लांट काना करूचे फोटोसिंथेसिस करूचे एंड प्लांट ऊपर के डिपेंड करूचे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आमे डिपेंड करूछु राइट तो प्लांट्स ऊपर आमे डिपेंड करला प्लांट कहार ऊपर डिपेंड करला लाइट ऊपर डिपेंड करला सो दैट लाइट विदाउट लाइट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट बिना लाइट रे हमर जीवनटा एग्जिस्ट करि नै पारे ओके the source of light हमें पाइसु केनो basically light that came from the sunlight but some of the light that also came from the moon or star ru भी हमें पाउछु but mostly greatly ecologically important केनटा है that is your sunlight okay the radiant energy that coming from the sun that form visible spectrum that is called as your light हमें जन light देखुछु जेन कहउछु visible light or visible spectrum बोली करी कहउछु okay and when a beam of light जेतेबेला हमर light आसुछि that light have several particles हमें light जन देखुछु that is having waves okay different wavelength of light आसुछि तार संगे संगे waves रो संगे संगे किछरा particles आसी okay and that particles are called as what photons light जेतेबेला आउछि light small particles भी आसी that is known as what photon and photon काना करथिसी photon have a certain amount of energy then photon आसुचे then light रे different particles आसुचे that particles having what that is having energy okay and that energy the amount of energy which is present in one photon of light that is known as quantum बोलिकरी कहसु okay देखो हमें लाइट के डिफरेंट जतकी भी लाइट आसुचे ओके जतकी भी लाइट आसुचे डिफरेंट वेवलेंथ रे मनकर लाइट मान को डिवाइड करा जाय छै जेना कि हमें जमा 10 टू द -8 वेवलेंथ रु 10 टू द 16 तक जदी जाउ छो 10 टू द -8 माने सबुथरु स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जेंटा कि होला कॉस्मिक रे तानो टिके हायर हला गामा रेस देन एक्स रेस देन यूवी रेस देन ई रीजन जन देखा हिचे दिस रीजन दैट इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम और विजिबल लाइट देन विजिबल लाइट पर ऐसे हमर काना देखो विजिबल लाइट रे हमर काना ऐसे विवगियर ओके विजिबल लाइट जेंटा कि 400 नानोमीटर रु नेकरी 700 नानोमीटर तक ऐसी तो विजिबल लाइट रे हमर काना काना प्रेजेंट सी विवगियर जेंटा कि वायलेट हला इंडिगो देन ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ओके इमाने एसन का केते रु केते वेवलेंथ अंडर रे आउछन 400 रु अप्रोक्सीमेटली 400 रु 700 नानोमीटर भीतर आसुछन देन हमर विजिबल लाइट परे परे इंफ्रारेड परे परे माइक्रोवेव परे आसछ हमर रेडियो वेव okay so this is the different category of the light according to their wavelength okay visible light that range from 400 to 700 nanometer and it is dispersed into series of wavelength having 7 color visible light रे हमर केतेटा कलर अछि 7 कलर जेंडे कि violet indigo green blue green yellow orange okay and red जेंडे कि हम विवगियर बोली कि कहउछु okay the photochemical activity that is greatest at the violet region हमर mostly photochemical activity काहे कि कहसु जिन एक्टिविटी that depend upon the light ताके कहम हम photochemical activity जने कि photosynthesis हला तो मोस्टली photochemical activity or light dependent activity can wavelength of light रे basically अधिका होते that is your violet end रे होछ okay and UV radiation that is just below or टिके हमर visible light ru just याड के रहला UV radiation has the greatest killing effect on the protoplasm UV radiation जदि हमर बॉडी रे पडुचे तो UV radiation that may kill our protoplasm हमर protoplasm cell रे जन protoplasm होचे सेदा के destroy करबार तार कैपेसिटी अछि ओके एज वेल एज UV radiation जदि हमर पडुचे हमर सेल रो भितर जन डीएनए प्रेजेंट अछि डीएनए के भी डैमेज कर देबार चांसेस अछि हमर बॉडी रे जदि डीएनए डैमेज हे गला तो डीएनए नो हमर काना फॉर्मेशन अछि आरएनए रो प्रोटीन सिंथेसाइज अछि तो डीएनए डैमेज हे गला बोले आरएनए बनि नै पारे आरएनए बनि नै पड़ला बोले प्रोटीन बनि नै पारे सो दैट हमर बॉडी रे प्रोटीन रो डेफिशिएंसी हिजबा और सेवरल टाइप ऑफ डिसऑर्डर शो करबा इन एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन ओके तो यूवी रेडिएशन इट इनएक्टिवेट द ग्रोथ हार्मोन जदि प्लांट के हम जे देखमा प्लांट रे जदि यूवी रेडिएशन पडुचे तो हमर प्लांट रे काना करबा ग्रोथ हार्मोन के काना करबा इनएक्टिवेट कर देबा सो दैट प्लांट रो ग्रोथ रिटार्ड हिजबा प्लांट रो ग्रोथ होई नै पारे
then X rays hela, gamma rays hela, in the living system they cause the mutation. Okay, mutation karbe, DNA ର different changes karbe X rays gamma rays. So high doses of the X rays or gamma rays jodi amar body re poduche, that may leads to that may be fatal, means that may leads to death of the organism. Light is usually measured by an electric instrument. आमे केन लाइट आसुची सेटा के मेजर करबार लगी, केते लाइट आसुची सेटा मेजर करबार लगी जे इंस्ट्रूमेंट यूज करसु सेटा होचे हमर लाइट मीटर और फोटोमीटर बोली करी कहू. ओके, तापर देखो लाइट इंटेंसिटी जितले देखुछु, लाइट रो इंटेंसिटी केते इंटेंसिटी ऑफ लाइट आसुची दैट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. किछि एरिया रे जह इंटेंसिटी ऑफ लाइट पडुचे, किछि एरिया रे कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट पडुचे. ओके, जेना कि change in light intensity from place to place, that is caused by several factors in the key affecting the atmosphere. Light jete bela pass kala atmosphere deikri, atmosphere re shorter wavelength of light that is absorbed by atmospheric gases. देखो हमर जते बेला लाइट आसुची हमर atmosphere रे काना अछि किछटा gases अछि, जेंता कि हमर नाइट्रोजन हला, ऑक्सीजन हला. नाइट्रोजन ऑक्सीजन इमाने काना करबे, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट जतकी अछि सेतके एब्जॉर्ब कर देबे. शॉर्टर वेवलेंथ केना रहला, कॉस्मिक रेज हला, गामा रेज हला, एक्स रेज हला, यूवी रेज हला, इमाने प्राय जनरली कहार द्वारा एब्जॉर्ब हो जासन, नाइट्रोजन हला, ऑक्सीजन इमाने इतके एब्जॉर्ब कर देबे. ओके, देन इन क्लाउडी डे जदि देखमा इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस करि जासी अप टू 4%. जतकी लाइट नॉर्मल डे रे एवर कथा हमर तानु 4% कम आसी जते बेले क्लाउडी डे आसी जासी जदि मेघवा पाक करूछे. एंड ड्यूरिंग क्लाउड्स और ड्यूरिंग फॉग जते बेले कुहुड़ी हेचे या फिर जते बेले बादल पाक हेचे, हाई प्रोपोर्शन ऑफ द लार्जर वेवलेंथ जेंदा कि हमर इंफ्रारेड हला एंड सम विजिबल लाइट दैट आर एब्जॉर्ब बाय द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. देखो काना कहला जते बेले हमर क्लाउड अछि से टाइम रे काना काना होछ, देखो क्लाउड 4% रिड्यूस करि गला बोलछे लाइट, कान ले 4% रिड्यूस करि जासे लाइट टा. क्लाउड टाइम रे हायर पर्सन ऑफ द लार्जर वेवलेंथ केनटा हमर विजिबल लाइट भी किछरा विजिबल लाइट रे जदि मा ऑरेंज हला, रेड हला, इ माने एज वेल एज योर इंफ्रारेड हला, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जेतले क्लाउड थिसी से टाइम रे हमर एटमॉस्फेयर रे मॉइस्चर थिसी ना. ओके, तो से मॉइस्चर दैट एब्जॉर्ब द infrared or some of the visible light. Okay, and shorter wavelength of light that is absorbed by the gases, जेंदा कि नाइट्रोजन हला, ऑक्सीजन हला, they will absorb. Okay, जेंदा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन माने shorter wavelength of light के absorb कर देबे. So light reaching under this condition that is known as diffuse light. ई कंडीशन रे जन लाइट आसुचे हमर अर्थ के ताके कहू छ हमें काम बोली कि that is known as your diffuse light बोली कि कहू. Okay, at equator more intensity of light that is falling, more intensity of light केनो पडुछे हमर जतिटा अर्थ हला, अर्थ रो इक्वेटर रीजन रे more intensity of light पड़सी. देखमा एटा हला दिस वन दैट इज योर सन, सन रो डायरेक्ट सनलाइट टा कहार ऊपर पडुछे, इक्वेटर ऊपर पडुछे. बट हमें सन रो जदि मा पोल अड़के, सन रो जदि मा पोल मनकर अड़के त हमर काना होचे लाइट इंटेंसिटी टा कमी जाउछ. Okay, so towards the pole intensity of the light that go on decreasing, but at the equator the light intensity that is more. Okay, what is the effect of light on water? Water upare जेतेबेले light पडुचे, water रे काना effect show करूचे light. In water medium, intensity of light that go on decreasing by increasing the depth of the water body. Water body जे देखमा suppose this is one water body हला, light पड़ला. ओके, भीतर के जे लाइट टा पास करूची जतकी तलके जिमा हमें वाटर बॉडी रो सतकी भीतर के हमर इंटेंसिटी ऑफ लाइट काना चल जिबा कमी जिबा. ओके, सो दैट लाइट जते बेले वाटर सरफेस ऊपर पडुची 10% ऑफ द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड 90% ऑफ द लाइट दैट इज पेनिट्रेटेड इनसाइड द वाटर बॉडी. काना कहला लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे पानी रो भीतर के जाचल जबा इंटेंसिटी ऑफ लाइट धीरे धीरे कमी जीवा. डेप्थ माने काना गभीरता, जतकी गभीरता के जिमा सतकी लाइट इंटेंसिटी काना बा कमी जीवा. राइट, ततिर लगी जतकी भीतर के जिमा सतकी अंधारिया लागुछे. हां, देन लाइट जतबेला वाटर बॉडी ऊपर पडुछे 10% ऑफ द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक, 10% रिफ्लेक्ट करी गला
and rest 90% of the light that is penetrated inside the water body. Okay, so इथिर लगे हमर काना हबा देखो submerged plant that will get weaker light. Submerged plant काहे के कहे जिन plants माने वाटर बॉडी रो पूरा भितरे देखबार के मिलसन समान को कहे सबमर्ज प्लांट. तो सबमर्ज प्लांट यदि वाटर बॉडी रो भितरे अछि बेले दैट विल गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट और वेरी वीकर अमाउंट ऑफ लाइट that will be taken by the submerged plant. But plants which are present over the surface, plants on the surface, that will get stronger amount of light. Okay, major part of the penetrating light that is absorbed by the upper layer. Generally upper layer में ही maximum amount of light टा absorb हो जासी. And when light reaches the water surface, major part of the rays of the shorter wavelength of light, then देखिए हमार VIBG, violet, indigo, blue and green. देखो काना कहला जते बेला लाइट टा वाटर बॉडी रे पडुची हमर मेजर पार्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रो शॉर्टर वेवलेंथ केनटा है V violet, I indigo, हमर blue and green इमाने काना हसन most of the violet, most of the indigo, most of the blue and most of the green light that are reflected back. Okay, and rest jar रहला समाने absorption. Right, mostly violet, indigo, blue and green इमाने कनेक्शन रिफ्लेक्ट करिसन most of the, but सबु amount of violet, सबु amount of indigo, सबु amount of blue, green इमाने पूरा रिफ्लेक्ट नहीं जान किछटा एब्जॉर्ब भी हैसन. Anyway, तो mostly VIVG, violet, indigo, blue, green इमाने जेतो रिफ्लेक्ट करि दिसन एंड सेतिर लागि बोली कि वाटर बॉडी टा केनता कलर है, वाटर बॉडी टा ग्रीनिश ब्लू कलर दिसु तो. ओके, किछि वाटर बॉडी ब्लू कलर दिसছে, किछि वाटर बॉडी ग्रीनिश ब्लू कलर दिसছে. व्हाई हमको गोटे एरिया टा गोटे पर्टिकुलर कलर कहार ऊपर डिपेंड करूचे, गोटे एरिया रो कलर टा दैट डिपेंड अपॉन द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, व्हाट काइंड ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट वाटर बॉडी और दैट बॉडी. हमर वाटर बॉडी रो केन लाइट रिफ्लेक्ट करूचे वायलेट, केन लाइट रिफ्लेक्ट करूचे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन पकापकी सब समान पकापकी जदी सब के मिसे दमा वाला पकापकी हमर ब्लू कलर और ब्लू ग्रीन कलर बोली करी कहउछो सेते लागि वाटर बॉडी रो कलर काने दैट इज योर ग्रीन कलर और ब्लूइश ग्रीन कलर देखुछु. ओके, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट लेयर इनसाइड द वाटर बॉडी. देखो हमर इंफ्रारेड लाइट देन देखि विजिबल लाइट परे परे अछि इंफ्रारेड लाइट that is absorbed in upper layer of the water up to 4 meter. Up to 4 meter तक हमर infrared light absorb होसी. Red and orange color light that is completely absorb up to 20 meter. Up to 20 meter हमर red orange color absorb होई पारसी. Yellow color that is penetrated up to 50 meter. Yellow color टा 50 meter तक yellow color light 50 meter तक enter करी पारसी. Green and blue light that penetrate up to 80 to 100 meter. Violet and UV light that can penetrate beyond 100. Okay, 100 रो अधिका केन माने पेनिट्रेट करि परसन violet और UV light. Okay, but light cannot penetrate beyond 200 meter. 200 मीटर रो अधिका आउ से भीतर के पेनिट्रेट करि नै पारे. अप टू 200 मीटर ही से काना करबा लाइट टा पास करि परबा. up to 200 meter light टा पास करी परबा and 200 meter परे परे और light टा पास करी नहीं पारे. ओके, इटा मन रखी तो डिपेंडिंग upon the penetration of the light ओशन के तीनटा जोन रे डिवाइड करा जैसी काना काना गोटेला euphotic zone, then dysphotic zone and another one aphotic zone. euphotic zone माने काना up to 50 meter, u माने true, actually maximum amount of light टा में euphotic zone रे देखबार के पामा. then dysphotic zone जहा के कहूछु 80 to 200 meter भीतर तक कहूछु हमें dysphotic zone and aphotic zone माने absence of photon or absence of light ताकि कहमा में aphotic zone that is below 200 meter. 200 meter रो भीतर क्या हो light penetrate नहीं करि पारे सेते लगी ताकि कहमा aphotic zone. Okay, then what is the effect of light on the suspended particles? As you know that several type of dust, smoke particles that are freely dispersed in the air as well as water. Okay,
आमे जतले जाउछु रास्ता रे जे जाउछु एटमॉस्फेयर रे हमर एयर रे देखुछु देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ डस्ट, several type of smoke particles are there. Okay, इमाने काना करसन दे क्रिएट ए स्क्रीनिंग इफेक्ट काना जे जेंता कि हमर सपोज गुटे हमें स्मोकी इंडस्ट्रियल सिटी जदी जिमा सेना हमर काना होचे सन देयर इज क्रिएशन ऑफ स्मैक माने काना जे धुंधलिया दिसबा जेंता कि दैट विल रिड्यूस 90% ऑफ द लाइट टू पास इनटू दैट सिटी. ओके, तो सेनो भी हमर काना होचे जेन हमर डिफरेंट डस्ट पार्टिकल हला दे आर नॉट अलाउइंग द लाइट टू पास. Then effect of different layers of vegetation. हमें जे लकमा लाइट टा जते बेले गुटे फॉरेस्ट रे पडुची केन प्लांट्स माने दे विल गेट मोर अमाउंट ऑफ लाइट टॉलेस्ट प्लांट माने. ओके, जेने कि मिडिल प्लांट और अंडरस्ट्रॉप प्लांट दे विल गेट द डिफ्यूज लाइट माने काना हमर बड़ बड़ प्लांट रो जे प्लांट माने ऊपरे अछि समान करते लीव्स माने अछन से लीफ रो जन गैप थिबा से गैप देखिरि वाटर लाइट टा पास करबा से के कहमा डिफ्यूज लाइट. And Amazon taller regular herbaceous plants, they will get very less amount of light or weaker light. So that in dense forest in a ghancho jungle jodi dekhma less than 1% of total sunlight that reach the surface. Amar forest surface ke less than 1% of the total sunlight पहुंची. बुझिएला. Next, importance of light to the plants. Earth, that is the very small object of the solar system. Solar system ro गुटे planet हसी हिसाबे धरुचो में Earth के. And that Earth receive 1.5 millionth of the total solar radiation of the universe. Total universe रे जतकी sunlight आसुचे total universe जतकी sunlight gain करूचे तार 1.5 millionth भाग 1.5 मिलियन भाग माने जदि सपोज 100 मिलियन जदि आसुचे सनलाइट के जदि 100 मिलियन धरला 1.5 मिलियन खाली सनलाइट दैट रीच द टू द अर्थ सरफेस एंड सता के जदि 100% धरला सेतरु 53% काना करूचे 53% दैट इज नॉट कमिंग टू द बायोस्फीयर. 53% रू माने सरा रिफ्लेक्ट करि जाउचे 34% रिफ्लेक्ट करि जाउचे एंड 19% काना होचे स्कैटर करि जाउचे बीचे ही जाउचे. एंड देन 47% रीच द बायोस्फीयर. 47% रीच करूचे बायोस्फीयर के जेंडे के लिविंग जोन के. 98 to 99% रिफ्लेक्टेड बाय द लीव्स. लीव माने रिफ्लेक्टेड कर दोछन 98 to 99%. And only 1 to 2% that is captured by the plants by the process of the photosynthesis. Okay, तापर देखो हमर जे देखमा हार्मफुल रेडिएशन जेने कि यूवी रेडिएशन हला और आउ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट जेने कि एक्स रेज हला गामा रेज हला दैट आर एब्जॉर्ब बाय द स्ट्रेटोस्फीयर. एंड स्ट्रेटोस्फीयर हमर केन जोन अछि ओजोन लेयर अछि दैट ओजोन लेयर दैट do not allow or that absorb the UV radiation, so that stratosphere टा हमर काना करूचे हमको बचाउचे from the different type of skin cancer. जदि हमर UV radiation जदि पड़ला हमर बॉडी ऊपर there may be chances of skin cancer, several damage होवर chances. Effect of light in photosynthesis. About 1 to 2% of the total sunlight that reaching on the earth surface is utilized by the plants. Only जतके अर्थ के आसुचे 1 to 2% जेंटा कि हमर प्लांट्स द्वारा यूटिलाइज होचे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एस्टिमेट करा दैछे डिफरेंट प्लांट्स दे विल गेट डिफरेंट लाइट के डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट वे रे यूटिलाइज करसन. पर एस्टिमेट करा गला गुटे कॉर्न प्लांट रे मक्का रे जे देखमा only 0.13% of the light is utilized. Okay, and all wavelength of light that is not utilized by the plant. सब wavelength ता utilize नहीं करबर किछिटा plants किछिटा wavelength of light के utilize करूचन किछिटा के नहीं करबर जेंदा कि green light जे देखमा that is completely reflected by the green part of the plant. जे देखमा plants तमर केनता कलर दुछे green color दुछे that means plants केन color के reflect करूचे green color के reflect करूचे से green color के utilize नहीं करबर से के reflected करी back कर दोछे. And red and blue that have the maximum absorption by the plants. Maximum plant absorb कर सके light के that is your red light और blue light के. Okay, so green plants that are the producer of the ecosystem. Ecosystem रे producer कहा के कहूचन जे without any help जे निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करी पासे ताके कहूचन producer.
plants can make their own food material. So that ecosystem re producer hisabe ke kaam karuche, that is your green plants. Okay, and green plants, they can synthesize their own food material, and food material can form re generally synthesize karse, that is your carbohydrate, and they from by the utilization of the carbon dioxide and water. Okay, so solar energy that converted into chemical energy by the help of the chlorophyll pigments in the green plants. Then rate of photosynthesis that is greater in intermittent light, and rate of photosynthesis that is lesser in continuous light. देखो काला कहला इस जगह में बुझाबार के ट्राई करछन, यदि गोटे प्लांट्स के कंटिन्यूअसली हम लाइट प्रोवाइड करते जाउथुमा, कंटिन्यूअसली लाइट प्रोवाइड करते जाउथुमा, बेले से प्लांट्स ता अधिका ग्रो करबा, से न अधिका फोटोसिंथेसिस हेबा कि कम फोटोसिंथेसिस, खाली लाइट प्रोवाइड करूथुमा न बेले लाइट जदी कंटिन्यूअसली जदी प्रोवाइड करूथुमा बेले फोटोसिंथेसिस रो रेट काना बा कमी जिबा, बट समटाइम्स लाइट प्रोवाइड कला, समटाइम्स टिके छाई कर दला, फिर टिके लाइट पडुचे, फिर टिके छाई होचे, ताके कहमा इंटरमिटेंट लाइट. तो इंटरमिटेंट लाइट रे फोटोसिंथेसिस रो रेट ता काना से अधिका रहसी ता हला जे, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जते बेला हमें डिस्कशन करिथिमा आगरु जानिथिमा, photosynthesis are two process or two reaction. One is the light reaction, that is the light dependent reaction, and another one that is your dark reaction, light independent reaction. पूरा light ऊपर dependent है, आउट light ऊपर independent है, and दो ही process continue, जदि दो ही process चालू छे, light reaction dark reaction दुही जदि चालू छे बेले जिकरे photosynthesis complete होचे. यदि continuously light यदि आसुचे तो light dependent process will be more and light independent reaction that will be less. Light independent reaction dark reaction कम जिबा. Light reaction रे NADPH as well as ATP जेने के energy production है, and dark reaction रे से energy टा utilize करी carbon dioxide टा glucose रे के convert है. तो ATP NADPH बहुत सारा formation है जिबा जदि continuously light formation, light जदि continuously पडुथबा plants ऊपर बेले, but say ATP and ADPS properly utilize ही नहीं पारन, so that rate of photosynthesis will be decreased in the continuous light and that will be increased in intermittent light. Intermittent light माने kana sometimes the plant is getting light, sometimes plant is not getting light. Okay, light that helps in the development of plastid and pigments. Yes, light ऊपर depend करूचे plastid as well as different pigments जेन माने कि photosynthesis करबार लगी help करसन, समान को development कहार ऊपर depend करसी, light ऊपर depend करसी. It effect on the number and position of the chloroplast. Light रो presence ऊपर depend करूचे केते chloroplast presence formation हबा, और chloroplast रो position कहार ऊपर depend करूचे, depend upon the light. Upper part of the leaf which receive more sunlight, that is having the more chloroplast. हमें देखमा leaf रो upper part जो देखमा, upper part that is more greenish, that means that are having more number of chloroplasts, and that upper part is getting more amount of sunlight. तापर देखो respiration संगे light रो काना relation रहुचे. Actually there is no direct effect of light on the respiratory activity of the plant. Plant रो respiratory activity और light जे देखमा direct effect नहीं ना, but respiratory substrate जेन देखी carbohydrate, respiratory substrate माने कना जेनटा जेन substance रो breakdown हबा respiration रे ताके क्वेश्चन respiratory substrate. Respiratory substance, one of the important respiratory substance जेने carbohydrate glucose हला, have the direct effect on the light. देखो लाइट और रेस्पिरेशन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं ना, इनडायरेक्ट रिलेशन बाहर करामा है पे काना इनडायरेक्ट रिलेशन जे हमर रेस्पिरेशन कहार ऊपर डिपेंड करूचे, डिपेंड अपॉन द ग्लूकोज, ग्लूकोज और ब्रेकडाउन हबा एनर्जी जनरेशन हबा, एंड ग्लूकोज कहार ऊपर डिपेंड करसे, दैट डिपेंड अपॉन द लाइट, बिकॉज़ ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस. Glucose is the product of what, photosynthesis. Photosynthesis depend upon what, light. लाइट है फोटोसिंथेसिस हवा, फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज फॉर्मेशन हवा, ग्लूकोज बनले जेकरे ग्लूकोज रा ब्रेकडाउन हवा केन प्रोसेस रे, रेस्पिरेशन प्रोसेस रे, बुझी पारलो. सो दैट रेस्पिरेशन इज इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द लाइट, बट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लाइट एंड द रेस्पिरेशन. In shade and underwater, photosynthesis is not sufficient for proper growth. देखो यदि हमें सैड प्लेसेस देखमा अंडर वाटर जे जिमा फोटोसिंथेसिस हेतकी सफिशिएंट नै हुए प्रॉपर ग्रोथ रो लागि, एंड अंडर दिस कंडीशन, ए कंडीशन रे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जस्ट फॉर द रेस्पिरेशन.
फोटोसिंथेसिस हेले ग्लूकोज रो फॉर्मेशन हबा ग्लूकोज रो फॉर्मेशन हेले प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करि परबा सेतिर लगी बहुत भीतर के जदी पॉलीजिमर सेडी प्लेसेस रे प्लांट्स काना करसी जे लाइट भी पाइसी तो लाइट रे जतकी भी फोटोसिंथेसिस करी करी फूड प्रिपरेशन करसी दैट फ्रूट इज ओनली जस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन this point is called as compensation point ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಸಿ compensation point माने कण rate of photosynthesis equal to rate of respiration माने जतकी photosynthesis होचे सतकी respiration होचे माने जतकी भी photosynthesis प्रोडक्ट ର formation होचे से प्रोडक्ट ता केनो यूटिलाइजेशन होचे respiration process रे यूटिलाइजेशन होचे ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಸೋ में काम लिखरी that is known as compensation point बोलिकरी कोइस okay and in this point dry weight of the plant that do not increase जतकी प्रोडक्शन होचे जदी से स्टोर है नहीं पाला बेले वेट ऑफ प्लांट रो ड्राई वेट ता बढ़वा के नहीं बढ़ी पारे प्लांट रे ड्राई वेट केते बेले बढ़वा जदी फूड प्रिपरेशन होतबा सेटा जदी स्टोर होतबा बट यू नो फूड रो स्टोरेज कथा ने आसबो और फूड जतकी बनुचे सेतकी रेस्पिरेशन रे यूटिलाइजेशन होचे सेता के कहूचो हमें कंपनसेशन पॉइंट बोली करी कहूचो सो दैट लाइट ऊपरे डिपेंड कला की रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली ओके एंड लाइट इंटेंसिटी जतकी बढ़ते जीवा सतकी अधिका फोटोसिंथेसिस हवा जतकी अधिका फोटोसिंथेसिस हवा सतकी रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करि पारवा ओके देन लाइट संगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा काना डिपेंड स्टोमाटा में कहा कि क्वेश्चन जब प्लांट्स रो एरियल पार्ट रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम पोर्स ओके जहार देखरी गैसियस एक्सटेंसिसी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करसी ऑक्सीजन रिलीज हेसी वाटर वेपर एंटर करसी वाटर वेपर रिलीज हेसी दैट इज थ्रू एन ओपनिंग ताके कोइसा में स्टोमाटा इन स्टोमाटा रो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैट डिपेंड अपॉन मोस्टली दैट डिपेंड अपॉन द लाइट ओके इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जनरली हमर स्टोमाटा टा ओपन हेसी लाइट रो प्रेजेंस रे काना हेसी स्टार्च हमर स्टोमाटा जेन फॉर्मेशन हेसी दैट इज बाय द हेल्प ऑफ टू स्ट्रक्चर जाके कोसा हम गार्ड सेल बोली के कोस तो हमर गार्ड सेल टा काना होचे देखो गार्ड सेल रे हमर काना थि स्टार्च प्रेजेंट थि स्टार्च ता काना इसी स्टार्च ता कन्वर्ट हेसी सुगर नेके कन्वर्ट हेसी जेतबले लाइट पड़सी ओके स्टार्च विल कन्वर्ट इट इनटू सुगर जेतले सुगर फॉर्मेशन हे जेसी इनु हमर काना इसी सुगर फॉर्मेशन हबार द्वारा इनु वाटर रो कंसंट्रेशन कमी जेसी so that तर पाखर जन सब्सिडियरी सेल थिबा सेनु से काना करबा वाटर गेन करबा जेतले वाटर गेन करबा हमर भितरे काना हबा प्रेशर हबा सो दैट ड्यू टू प्रेशर हमर स्टोमाटा रो जे ओपनिंग अछि ओपन हे जिबा एंड इतर देखरी वाटर टा वेपर हिसाबे रिलीज करि जिबा ओके सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोमाटा ओपन एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट स्टोमाटा ओके एडा गला हमर काना that is your stomata opening and closing so that stomata that is the part of the transpiration process okay and more day period re adhika rate of transpiration dekhbar ke milsi then growth and flowering of the plants amor light that directly depending or that influence the growth and flowering of the plants light have effect on the growth of the plants okay growth of the plant that depend upon the intensity quality duration and direction of the light okay केते intensity आछे केन quality of light आछे केते duration तक रहउचे light केन direction रे light आछुचे that सब ऊपर डिपेंड करूचे growth of the plants high intensity of light जदी पडुची there will be decrease in the oxygen production oxygen गुटे growth hormone है high intensity of light रे oxygen रो production बेसी हे नहीं पारे plant रो height बढ़ी नहीं पारे लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यदि पड़वा देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन जेहेतु अधिका हे जिबा प्लांट बहुत हाइट रे ग्रो करि जिबा बट प्लांट बहुत स्लेंडर पतला हे करि ग्रो करबा इलोंगेटेड हे जिबा पेल कलर आसबा स्टेम एंड लीफ मनकर साइज कानाबा वेरी स्मॉल साइज हे जिबा सो दैट दुई जन मजा मजी यदि मिलु छे तो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन रो प्रोडक्शन अबा ग्रोथ हार्मोन रो प्रोडक्शन then duration of the light के क्वेश्चन में काम करें that is known as photo period according to response to photo period plant के हमें तीनटा कैटेगरी डिवाइड करू गोटे लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट फोटो पीरियड काहे के कहूछु केते टाइम तक लाइट ता अवेलेबल रहउची ताके कहूछु फोटो पीरियड ओके
So different plants they require different photoperiod. Gen plants which are giving flowering or plants which bloom when light duration is more than 12 hours per day. Per day जदि more than 12 hours of light आसुची सेथिरे जदि जेन माने से कंडीशन रे जेन plants माने flowering दउसन से मान को कहमा long day plant. And plants which bloom when the light duration that is less than 12 hours जदि less than 12 hours of light आसुचे और plants टा flowering production करूचे तो ताके कहमे short day plant बोलिकरी कह. ओके जेंदा कि सीरियल्स प्लांट हला टोबैको प्लांट हला दहलिया प्लांट हला दीज आर द शॉर्ट डे प्लांट. नेक्स्ट असला हम डे न्यूट्रल प्लांट्स. डे न्यूट्रल प्लांट माने न्यूट्रल प्लांट दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द डे लाइट ऊपर डिपेंड नहीं करबार ताके कहू हमें डे न्यूट्रल प्लांट्स. एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स शो लिटिल रेस्पॉन्स टू द लेंथ ऑफ द डे और दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डे पीरियड और लाइट पीरियड. जेंदा कि कॉटन प्लांट हला बाल्सम प्लांट टोमेटो प्लांट माने होचन डे न्यूट्रल प्लांट. And on the basis of getting the direct or indirect sunlight, किछटा plants direct sunlight gain करूछन, किछटा plant they are getting indirect sunlight or shady places रे जेन माने grow करूछन छाई रे grow करूछन. तो सेतके बेस करी जेन माने direct light रे grow करूछन समान को कहूछु heliophytes. short note रे से what do you mean by heliophytes? Okay, or the plants which are growing in direct sunlight are called as dash, fill in the blanks, that is your heliophytes. And the plants which are growing in shady places or shade रे जेन माने grow करसन छाई रे जेन plants माने grow करसन ताके कहूछु sciophytes. जेन कि very tall plants are there in a forest, they are getting direct sunlight समान को कहमा heliophytes. And very small size of plants which are growing in the shade of the plants that are called as what? Sciophytes. Okay, then light and the movement of the organism. Plants ro movement, plant ro different plant parts ro movement hoche. Okay, and that light also effect on the movement of different plant parts. Okay, stem, root, leaf, they show different response to the light, right? So light effect of on the plant movement, that is called as your heliotropic effect. काना कहला the light रो different parts they are responding for the movement. कहा के response करछन light के. Light जेतेबेले stem ऊपर पडुछि, the stem that is moving towards the light. Okay, but root that is moving away from the light, right? And amor जे देखमा leaf that is getting dispersed light और ताकि हमको तेरछा light दरकार होछि. तो leaf से हिसाब मूव करूछि एंता मूव करूछि so that proper amount of light से gain करी पारबा. स्टेम टा सीधा ग्रो करछे लाइट टार के मूव करते जाउछे एंड रूट टा अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करूछे जेंटा कि हमें नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक पलिकरी कहूछु. तो ये जो सब जन मूवमेंट होछे बाय रेस्पोंडिंग टू द लाइट ये टाइप रो मूवमेंट दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट ताके कहसु हमें हेलियोट्रॉपिक मूवमेंट पलिकरी कहसु. व्हाट डू यू मीन बाय हेलियोट्रॉपिक इफेक्ट? Okay, this is called as heliotropic effect. Okay, so the stem elongated towards the source of light जाके positively phototropic question. हमर stem टा केनार के elongate हबा towards the light ताके question positively phototropic. Root that is negatively phototropic. Leaves that grow transversely to the path of the light to reach the maximum sunlight. And leaves oriented on the stem एंता हिसाबे orient हेतेसी जे the leaf all the leaves they are not overlapping each other. सब leaves एंता हिसाब सजे हितिबे इटा गुटे लीफ जदी हला इटा गुटे लीफ जदी हला ईवी लाइट गेन करि परथबो ईवी लाइट गेन कर के का के ओवरलैप नाही कर. ओके, तापरे असला हमर जर्मिनेशन ऑफ द सीड. सीड रे जर्मिनेशन ऊपर भी लाइट रो इफेक्ट पडु छे. यस, देखो जर्मिनेशन कहा के कहसु सीड के जेतबला सॉइल रे ग्रो करूछु वाटर टिके प्रोवाइड करूछु सीड रो ऊपर के काना ग्रो करूछे तर स्टेम पार्ट एंड लोअर साइड के काना ग्रो करूछे दैट इज योर root part. Okay, तो seed रो growth के कहूछु seed germination. The red light that promote the germination. Question is see which light generally promote the seed germination? That is your red light. But far red light जदि देखमा just after the red light हमर काना छै far red light that inhibit the germination of the seed. Far red light रे सहज हमर seed रे germination नै होई. And germination that required a pigment जाके कहसु हमें फाइटोक्रोम बोलिकरी कहसु.
ओके एंड फाइटोक्रोम दुईटा फॉर्म रे एग्जिस्ट करसी गोटे हला फाइटोक्रोम पीआर एंड आउट हला पीआरएफ ओके तो फाइटोक्रोम और पीआर जेंटा के एक्टिव फॉर्म के कहउछो एंड पीआरएफ जहा के कहउछो हमें इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द फाइटोक्रोम ओके तो पीआर पीआर टा कन्वर्ट एसी पीआरएफ निके ओके पीआर टा कन्वर्ट एसी हमर काना पीआरएफ निके कन्वर्ट एसी at 660 nanometer and PRF that converted into PR at 730 nanometer. These are interconvertible. Okay. So PR जेतेबेले light gain करूचे red light that will germinate and that will convert into PRF at 660 nanometer and PRF again converted into PR form at 730 nanometer. इतर बाबत mechanism हमें metabolism जेतेबेले पढ़मा डिस्कशन करमा आज क्लास रे में डिस्कशन नहीं करू इतर बाबत रे जस्ट ओवरऑल में तुमको कहि देली seed of the some plants that require blue light also किछटा seeds they are requiring blue light experiment करा जाइथिबा and one of the plants in the type of plant और जाके elephant grasses बोली कि कहसे that germinate the seeds at yellow light okay so this is the effect of light on germination of the seeds okay इटा गला हमर काना दैट इज योर लाइट एज द इकोलॉजिकल फैक्टर बहुत सारा हमें पढ़ला आज लाइट बाबद रे लाइट एज द इकोलॉजिकल फैक्टर ओके आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन तुमको मन को काना करबार अच्छे जहां भी पढ़ो छे जहां भी लिखतेल जाउ छे ऑल दीज आर नोट्स जहां लिखतेल जाउ छे जहां भी मोर बोर्ड रे आस्तल जाउ छे सब तुमर लागि नोट है एतकी के लिखी चलो क्लास करते चलो बुझते चलो लिखते चलो दैट विल बी अ वेरी गुड नोट फॉर ऑल ऑफ मत तुमको पचराबार न पड़े केनता लेखमु नोट काना करमु जहां लेखा है दैट इज योर नोट ओके हमें आज जे लाइट है तो इकोलॉजिकल फैक्टर पड़मा एतिकी टके हमें एग्जाम रे भी लेखबाटा पॉसिबल नहे से पर जदी जेतकी अधिका जानी थिमा हमें जेतेबेले एग्जाम दोतमा जानी थिमा बेले ततके लेखि पारमा सब लेखबार जरूरी नहे से बट जेतकी अधिका जानी थिमा सेतकी अधिका हमें एग्जाम रे लेखि पारमा सेति लगे मैक्सिमम रो मैक्सिमम मैं तुमको इना प्रोवाइड कर देली देन इट इज योर ड्यूटी how to represent that in your copy okay तो कॉपी रे देखे टिक के जस्ट मॉडिफाई करके लिखि परबो या फिर जहां लिखाई यू कैन राइट दिस दैट विल बी अ गुड नोट okay so I hope you enjoy this session and if you like this video please share this with your friends and colleagues thank you